कभी कभी मैं खुद को ही नहीं समझ पाता. Sometimes I don't even understand myself. Sometimes I do not even understand myself. उसका रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा. Her behavior isn't the same anymore. Her behavior is not the same anymore. कभी कभी कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए. Sometimes certain things should be left to time. Sometimes certain things should be left to time. तुम इतनी छोटी बात पर क्यों भड़क जाते हो? Why do you get so triggered over small things? Why do you get so triggered over small things? मैंने उसे मना किया था, फिर भी वो चला गया. I told him not to, but he still went. I told him not to, but he still went. क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सही हो? Do you still believe you are right? Do you still believe you are right? ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? How did all of this happen so suddenly? How did all of this happen so suddenly? मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ. I want to be alone for a while. I want to be alone for a while. तुमने जो किया वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है. What you did means a lot to me. What you did means a lot to me. इतनी जल्दी तो मैंने कभी किसी को नहीं बदला देखा. I have never seen someone change this quickly. I have never seen someone change this quickly. उसका जवाब सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया. I was speechless for a moment after hearing his reply. I was speechless for a moment after hearing his reply. तुम्हारे इरादों पर अब शक होने लगा है. I'm starting to doubt your intentions. I'm starting to doubt your intentions. तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है. What you did I don't have. What you did I do not have. तुम्हारे आने से पहले बहुत कुछ बदल चुका है. A lot has changed before you arrived. A lot has changed before you arrived. तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? Who gave you permission to come here? Who gave you permission to come here? अब जब तुम यहाँ हो तो क्या करने का इरादा है? Now that you are here, what do you intend to do? Now that you are here, what do you intend to do? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है. Do you realize you have very little time? Do you realize you have very little time? अगर तुम 10 मिनट और देर करते तो बहुत देर हो जाती. If you had been 10 minutes later, it would have been too late. If you had been 10 minutes later, it would have been too late. तुम्हारे पास अपने फैसले को पलटने का अब मौका नहीं है. You no longer have the chance to reverse your decision. You no longer have the chance to reverse your decision. मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया. I tried calling him many times but got no response. I tried calling him many times but got no response. क्या तुम्हारे पास उसका नंबर अब भी है? Do you still have his number? Do you still have his number? कभी कभी कॉल से ज़्यादा ज़रूरी होता है सामने बात करना. Sometimes talking face to face is more important than calling. Sometimes talking face to face is more important than calling.
क्या तुमने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया? डिड यू ऑल्सो मैसेज हिम ऑन व्हाट्सएप? डिड यू ऑल्सो मैसेज हिम ऑन व्हाट्सएप? वो कॉल लेने से साफ इनकार कर रहा है. He is outright refusing to take calls. He is outright refusing to take calls. शायद वह अब तुमसे बात नहीं करना चाहता. Maybe he doesn't want to talk to you anymore. Maybe he does not want to talk to you anymore. तुम्हारी आदतें अब सुधारने लायक हैं. Your habits are in desperate need of improvement. Your habits are in desperate need of improvement. हर समय समझाना नहीं पड़े, ये तुमसे उम्मीद है. We expect that we won't have to keep explaining everything to you. We expect that we will not have to keep explaining everything to you. अब भी नहीं सुधरे तो मुश्किल में पड़ जाओगे. If you don't improve now, you will get into trouble. If you do not improve now, you will get into trouble. तुम्हारा रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है. Your behavior is extremely irresponsible. Your behavior is extremely irresponsible. तुम्हें यह भी नहीं पता कि साधारण चीज़ें कैसे की जाती हैं. You don't even know how to do basic things. You do not even know how to do basic things. कभी सोचो कि तुम्हारी छोटी गलती का कितना बड़ा असर हो सकता है. Think about how big an impact your small mistake can have. Think about how big an impact your small mistake can have. समय तेजी से निकल रहा है, हमें अब चलना होगा. टाइम इज़ रनिंग फास्ट, वी हैव टू लीव नाउ. टाइम इज़ रनिंग फास्ट, वी हैव टू लीव नाउ. तुम हर सवाल में इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी आंसर? हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी आंसर? फ़ोन की रिंगटोन बदल दी है क्या? डिड यू चेंज द रिंग ट्यून? डिड यू चेंज द रिंग ट्यून? तुमने स्क्रीनशॉट क्यों डिलीट कर दिया? वाई डिड यू डिलीट द स्क्रीनशॉट? वाई डिड यू डिलीट द स्क्रीनशॉट? क्या तुम्हारे पास पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं? डू यू हैव लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स? डू यू हैव लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स? मुझे वो नंबर दो, मुझे खुद कॉल करके पूछना है. गिव मी दैट नंबर, आई वॉन्ट टू कॉल एंड आस्क माई सेल्फ. गिव मी दैट नंबर, आई वॉन्ट टू कॉल एंड आस्क माई सेल्फ. क्या तुम्हें वाकई उस सवाल की थ्योरी समझ में आई थी? डिड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड दैट क्वेश्चन? Did you actually understand the theory behind that question? तुम्हारे यहाँ आने से स्थिति और जटिल हो गई है. Your arrival has made the situation more complicated. Your arrival has made the situation more complicated. तुम्हारी देरी ने हमें मुश्किल में डाल दिया. Your delay has put us in trouble. Your delay has put us in trouble. तुम्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए थी. You should have prepared earlier. You should have prepared earlier. तुमने जितना समय लिया उससे ज़्यादा हमारे पास था ही नहीं. The time you took was all we had. The time you took was all we had. यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? What is your purpose for coming here? What is your purpose for coming here? तुमने सही समय पर आकर बहुत अच्छा किया. You did well by coming at the right time. You did well
by coming at the right time. अगर तुम 5 मिनट और रुकते तो सब कुछ खत्म हो जाता. If you had waited 5 more minutes, everything would have been over. If you had waited 5 more minutes, everything would have been over. तुम्हारे यहाँ आने की वजह से हमें एक और मौका मिला. Because of your arrival, we got another chance. Because of your arrival, we got another chance. तुम्हें यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई. Did you face any trouble reaching here? Did you face any trouble reaching here? इस समय पर यहाँ आना आसान नहीं था. It wasn't easy to come here at this time. It was not easy to come here at this time. मैं आने से पहले तुम्हें सुनिश्चित कर दूंगा. I'll inform you before I arrive. I will inform you before I arrive. उसे अकेले ही उस स्थिति का सामना करना पड़ा. He had to face that situation alone. He had to face that situation alone. मैं सुबह तक तैयारी पूरी कर लूँगा. I'll complete the preparation by morning. I will complete the preparation by morning. वह इतना डर गया था कि कुछ सोच ही नहीं पाया. He was so scared that he couldn't think straight. He was so scared that he could not think straight. समय के साथ सब ठीक हो जाता है. With time everything falls into place. With time everything falls into place. So friends, ये था हमारा आज का वीडियो. If you like this video and learn something new from this video on this channel, then don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel English Succeed Pro. Keep learning, keep growing. Thank you everyone.